Assalamualaikum. Walaikum assalam. Anian, how are you? I'm fine, sir. आप Oh, सुनाए? okay. I'm also fine. Just a minute. I'm just sharing you the screen. Look. आज हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हमें समझना है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Look, a particle P moves in a straight line. The velocity v meter per second at times t is given by थ्री एक्सप्रेशंस. जैसे यहाँ पर आपको वेलोसिटी के तीन एक्सप्रेशंस गिवन है. वेलोसिटी इक्वल्स 5t इंटू टी माइनस टू फॉर 0 to 4 seconds. For 0 to 4 seconds. So equation 1 is given. This is very important. Look, this is equation number 1. Actually this is the time interval. From 0 to 4, the expression for the velocity is v equals 5t into t minus 2. He is asking k is constant, find the value for k. आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो we have a time interval. First time interval is this 0 less than t, which is less than or equal to 4. Now tell me, when t is 4, when t is 4, when t is 4, so what is your velocity when t is 4? I cannot put 0 in this equation, so if it is 5 into 4 into 4 minus 2, 5 times 4 is 20, 4 times 2 is 2, so it means my velocity is 40 meter per second. But he said in second equation your v equals k. If v equals k and v is 40, so it means if v equals k and v is 40, then you can say the k is also 40. So our answer for k is 40. यहाँ तक समझ आई? जी सर. देखें, ये इस पहले क्वेश्चन के बाद फिर आप बताते जाएं जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, फिर वो आपको सॉल्व कराता जाता हूँ. देखें इस पार्ट में, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल होता है. इस टाइम इंटरवल की मदद से आपने जो है ना डिफरेंट एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं और इसका जो ग्राफ बनाना है और डिस्टेंस बनाना होता है. सो पहला तो हो गया. नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग sketch the velocity time graph from 0 to 20. From 0 to time interval, 3 time intervals are given: 0 to 4, 4 to 14 and 14 to 20. So how you are going to get your, look, we know for first interval, and the first interval is 0 till 4. For 0 till 4, velocity is 40 meter per second. Okay, we did that. Now the first equation is actually the quadratic equation. Look at the first equation. That becomes, if I multiply with 5t with the bracket, so it will be like 5t square minus 10t.
when you have a quadratic equation, so it means the section of the quadratic will be the upward parabola or the downward parabola. If the coefficient of t square is positive, then you are getting your happy face, the upward parabola. So I will surely keep this thing in my mind. It is a quadratic, and if it is quadratic, then the derivative at the stationary point must be 0. Derivative at the stationary point must be 0 whenever you get a quadratic expression. So I am going to take the derivative of this thing. So the derivative of the velocity dv by dt will be equal to, what is the derivative? 5t square minus 10t. Tell me, 5 times 2 is 10t. 10t 10t minus 10. minus 10. Great. But this parabola at this point, this is the minimum point. This is minimum point. And we know at minimum point, the derivative for turning point, you have to mention over here for turning point, for turning point, for turning point derivative dy by dt is 0. If this derivative is 0, so you have to make the expression 10t minus 10 equal to 0, and 10t equals 10 and t equals 10 divided by 10, it giving you 1. So when t is 1, that was a tricky part of the question. स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक करनी ही करनी थी. They ignore the quadratic part of the equation and they do not take the derivative, then their graph जो है ना is not considered the correct one. So when time is 1, you can put your value in this expression in the velocity. Look, when your time is 1, velocity will be, I have to put it in this expression, in this velocity. Look, if my time is 1, 5 into 1 square minus 10 into 1, so I am getting 5 1 square, this is 5, and this is minus 10, so it's minus 5. So the coordinate I obtain is 1 and minus 5. I am done this section. Now the third time interval is 4 less than or equal to t, which is less than or equal to 14. दानियल फोकस. अगर मैं यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, we have a equation for third interval. For third interval I have a equation v equals 68 minus 2t, and for second interval v equals k, so that is the same answer. इस पार्ट में आपने जस्ट कोऑर्डिनेट when time is 4, when t is 4, what is your velocity? Sir, my velocity is 40 meter per second, because when time was 4, it was considered to be the 40. But when it is 14, when time is 14, then what is my velocity? When time is 14, the equation is 68 minus 2t. So get velocity over here.
if it is 68 minus 2 into 14, when time is 14, 40 आता है. 68 minus 28, again you are getting your 40. Excellent. Now I am going to make the graph now. अब ग्राफ में यहाँ पे बना देता हूँ इस स्पेस के अंदर, फिर इसको हम इरेज कर लेंगे. नाउ लुक, फॉर मेकिंग योर ग्राफ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना स्केल बनाना है. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम ये मैं अपना ग्राफ बनाता हूँ. एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लेनी है, और यहाँ पर मैंने ज़ीरो ले लिया, और यहाँ पर मैंने -5 ले लिया, और स्केच करना है. यहाँ पे मैंने 28 ले लिया, और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी 40 ले ली. तो यहाँ पे मैंने सपोज 4 ले लिया. 4 के बाद मेरे पास अगला टाइम 14 था. 14 के बाद देन आई टेक 20 on time axis. So at start I have my 0, then at 1 I have -5, at 1 I have -5. I make a quad. Look, for this is the coordinate 1 -5, जिसके लिए मैंने डेरिवेटिव लिया था. डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने उसका जो है ना पॉइंट लिया था. तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक में आपका जो कर्व होगा वो यहाँ पर लेट्स सी 1 है, तो आप कहोगे इट वुड बी अ लाइक दिस थिंग, ये लाइक दिस, इट्स अ क्वाड्रेटिक वन, it's a quadratic one, and it will go like this, it will go like this. This is a quadratic, this is a quadratic. Quadratic is a upward parabola, and it will go like 40, it will go till 40. तो 40 तक आपने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है. अगर यहाँ पर होता तो इसका जो है ना सेकंड पार्ट भी आपने लिखना था. तो दिस इज़ एक्चुअली 1, -5, 40 तक है. एंड देन 40 till 14, speed remains the 40. 40 till 14, look, time up till time 14 my speed remains constant. आपने खुद बोला था टाइम 4 पे भी 40 था और टाइम 40 पे भी 40 था, सो इट रिमेन्स द सेम. एंड देन it at 20, when you put 20, what is the answer? हमने तो वो ऑब्टेन ही नहीं किया था फॉर वेलोसिटी व्हेन टाइम इज़ 20. सो अगर आप कहते हो कि दिस इज 68 -2 into 20, now I'm putting the time 20, so it's 68 minus 40, so it is giving you like 28. So at 20 it's 28, at 20 it's 28, like this. This is 28, and the graph will be like this, downward. So when time is 20, 20, 28, you can draw the coordinates over here. When time is 20, the velocity is 28. When time is 14, the velocity is 40. When time is 14, the velocity is 40. We are done with our graph. So it was 3-mark question. Plot a graph for which from time interval sketch a velocity time graph from 0 till 20. This is very important question, जहाँ पर आपको complete journey description दी जाती है. Look, a particle P moves in a straight line. The velocity v meter per second at time t is given by this expression, where k is the constant. Find k, and I do all the steps. k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. देन द स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच किया. अब
नेक्स्ट पार्ट में मुझे इसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है, सो आई एम डिलीटिंग दिस सेक्शन। अब इसको डिलीट कर दो। यस, लुक, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट पार्ट करना है। आप यहाँ पर जो आप जानते हो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से आता है। द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी with respect to time is actually the acceleration. So I have three equations. I have a derivative of 10t minus 10, its first interval. Then the second derivative is 40. The derivative of 40 is 0. And third equation derivative is minus 2. I have three equations. This is the for time interval when time is 14 less than t, which is less than or equal to 20, and the derivative for 0 is for the time interval. This is the derivative for the time interval from 4 till t and less than equal to 14, and the first one was till 0 till 4. Acceleration is positive. Acceleration is greater than 0. When acceleration is positive, your first derivative 10t minus 10 is greater than 0, then automatically I can say my time is greater than 1. My time is greater than 1. Then when time is greater than 1, then the set of the time values could be written as time is greater than 1 and it is less than or equal to 4. So this is the set of values. This is the set of values when p is positive. Otherwise acceleration is 0 or negative. Find the set of the values of the time for which the acceleration of p is positive. Find the set of values of t for which the acceleration of p is positive. Now coming to the last part, जिसमें आपने डिस्टेंस निकालना है। याद रखो, डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग। यहाँ पर आपके पास एक रूट है, इसको कहते हैं डी वी ए, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, टेक डिफरेंशिएशन, डू डिफरेंशिएट, डू डिफरेंशिएट। बट जब आपने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से वापस आना है, आपने इंटीग्रेट करना है, जस्ट इंटीग्रेट। एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको इंटीग्रेट करना है। सो DVA, the forward procedure, the forward route, displacement to velocity will be obtained by differentiating the displacement expression, and by differentiating the velocity you are going to get your acceleration, and vice versa. Just integrate the acceleration, displacement and get your velocity, and by integrating the velocity we are going to get the displacement. Look, we have equation total displacement हमने निकालना है यहाँ पर। तो हमारे पास टाइम इंटरवल अगर स्टार्ट से है 0 t which is less than or equal to 4,
when time is 0, velocity is 0, and the expression for the velocity is 5t square minus 10t. When time is 0, the velocity is 0. When time is 0, velocity is 0. So it's 5t. Look. You have to do in this way. If it is 5t and into t minus 2, it's equal to 0. When velocity is 0, I can get my time in this way. So 5t equal to 0 and t equals 2. Now finally I am going to get my total distance traveled. यहाँ पर आप हेडलाइन दो और बोलो total distance traveled. मैंने आपको वो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है जो यहाँ पे ट्रैवल होगा. आपको लिमिट यूज़ करनी है. लुक, आई एम गोइंग टू take the time interval from 0 till 2 when velocity is 2. My expression for the velocity is 5t into t minus 2 dt. This is my first, and then plus the second interval is from 2 till 4, and my expression is 5t into t minus 2 into dt, plus there is rectangle in the shape, and that would be length into breadth, that is 10 into 40, plus there is there is a trapezium. So the organized shape, the well defined shape cannot be integrated. इंटीग्रेशन सिर्फ कर्व्स के लिए की जाती है जब शेप डिफाइन नहीं होती. when you have a rectangle, when you have a trapezium, so we can apply the formula for the trapezium. So this is 40 and this is, and the second one is 28 in the shape. So this is a complete route. Look, this is a shape. I have deleted the shape, but there is a curve. आपने कर्व की इंटीग्रेशन करनी है. रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू विड्थ लगाना है और ट्रेपीजियम के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है. अब जस्ट आपने इसमें इंटीग्रेशन करनी है, और जब आप इंटीग्रेशन करते हो आप मॉडुलस का साइन पुट कर देते हो. यहाँ पर आप मॉडुलस का लाइन पुट करो. मॉडुलस जो है ना, लिमिट आपकी यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक हो जाएंगी, और यहाँ पर आपने जो है ना इसको मल्टीप्लाई करें तो यू हैव योर 5t स्क्वायर माइनस 10t, और आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय अप्लाइंग द पावर रूल. आप इसमें 1 ऐड कर दो तो, और आपके पास जो है ना डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो यहाँ पर भी आपने 1 + 1, पावर ऑलरेडी इज़ 1, आप इसमें 1 और ऐड कर दो और 2 से आप इसको डिवाइड कर दो. आगे प्लस यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन हो गई. अगेन प्लेस द मॉडुलस साइन एंड यू हैव योर एक्सप्रेशन 5t स्क्वायर. you have your 5t square. Look, you have your 5t square. You have 5t square, and you are supposed to add 1 by power rule. Divide the expression with 3, and in the same way there is 10t power 1 plus 1 divided by with the new power, and you will be done with your integration. And the limits start from 0 till 2, and 40